ग्रेजुएशन हो गया, सीए करने की सोच रहे हो, क्या बात है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं पता, अरे डोंट वरी, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। यहाँ पर हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू एनरोल इन द सीए कोर्स थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज यहां पर मैं आपको बताऊंगी अ डिटेल प्रोसीजर फॉर प्रोविजनली रजिस्टरिंग ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, detailed procedure for students who have completed their graduation or post graduation. Also, we will discuss a detailed procedure, a step-by-step procedure for students who have cleared their CS or CWA inter-examination. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Aggarwal and I make videos specially for you. Do visit my website theorymasterslearning.com for CA books, lectures and test series. सबसे पहले देख लेते हैं दैट हु इज एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर आपने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड यू हैव स्कोर्ड एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर सपोज आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो लेकिन आप कोई अदर स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड यू हैव स्कोर्ड मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सीए इंटर थ्रू द डायरेक्ट एंट्री रूट। Candidates who have passed the intermediate level of Company Secretaries of India or Institute of Cost Accountants of India, then you are eligible to directly enroll for the CA Inter through the direct entry route. तो आप अगर एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो स्कोरिंग मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, या फिर आपने ग्रेजुएशन कोई दूसरे स्ट्रीम से किया है लेकिन 60% एग्रीगेट में आया है, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए कर सकते हो। अगर आपका सीएस इंटरमीडिएट या फिर सीडब्ल्यूए दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंटरमीडिएट लेवल है वो आपने क्लियर कर लिया है, तो आप सीए इंटर के लिए डायरेक्ट रूट से रजिस्टर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तभी आप रजिस्टर कर सकते हो। इंस्टीट्यूट तो बोलता है टाइम क्यों वेस्ट करना है, when you are in your final year of graduation, registration कर लो, अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। There is a small IT कोर्स जो कंप्यूटर का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो even before your graduation result. एटलीस्ट वो करके आपका टाइम सेव होगा, 4 वीक्स का कोर्स है, वो कर लो। तो ICAI ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दी है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रोविजनल मीन्स कि आपका रिजल्ट आया नहीं है लेकिन उसके पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा आप अपनी मार्कशीट अपलोड करके उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल कर देना। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेप वाइज डिटेल्ड प्रोसीजर इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द सीए इंटर एग्जाम इवन बिफोर योर ग्रेजुएशन रिजल्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विजिट द वेबसाइट ऑफ ICAI, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टेप 2, रजिस्टर एंड कंप्लीट योर 4 वीक्स ऑफ ICITSS। व्हाट इज दैट? इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ओरिएंटेशन कोर्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। ये 4 वीक्स का एक कंप्यूटर का IT कोर्स रहता है एंड सॉफ्ट स्किल्स, वो 4 वीक का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। ये 4 वीक का जो कोर्स है उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। ये होने के बाद आप अपना ग्रेजुएशन एग्जाम दोगे, यू विल क्लियर योर ग्रेजुएशन एग्जाम and then submit proof of passing the graduation exam within 6 months from the date of appearance in the final year of graduation exam. इतने स्टेप से मुझे ये समझ में आता है कि सबसे पहले ICAI के पास रजिस्टर करना है। आप ग्रेजुएशन एग्जाम के पहले वो 4 वीक का IT कोर्स कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। IT कोर्स करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, 1 मंथ सेव हो जाएगा आपका।
4 वीक का जो कोर्स है वो कर लो, फिर आप अपना ग्रेजुएशन एग्जाम दे दो, ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लो। अच्छा, ऐसा भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं मैम एग्जाम के बाद अगर हमने 4 वीक का कोर्स कर लिया तो चलेगा, रिजल्ट आने से पहले, वो भी कर सकते हो। बट मेरा ये बोलना है कि रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, कर सकते हो आप 4 वीक का कोर्स इवन बिफोर योर रिजल्ट। फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो सबमिट अ प्रूफ विद इन 6 मंथ्स ऑफ योर एग्जाम। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, प्रूफ आपको अपलोड करना है अपने एसएसपी पोर्टल में जाके, जब जहाँ पर आप रजिस्टर कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है और आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो प्रोविजनल विल बी कन्वर्टेड टू फाइनल। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम, वी विल सबमिट अ प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग द ICITSS कोर्स। तो आपका कंप्यूटर कोर्स हो गया, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, ये सब कुछ आप ICAI के पास सबमिट कर दो। स्टेप 6, नाउ यू विल रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप। देखो, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए करना चाहते हैं उन्हें 9 मंथ्स की जो आर्टिकलशिप है वो अपने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के पहले कंप्लीट करनी पड़ती है। ओनली आफ्टर यू कंप्लीट दोज 9 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप आप एग्जाम दे पाओगे। वैसे आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स, लेकिन उन 3 ईयर्स में 9 मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट बिफोर योर सीए इंटर एग्जाम। तो रजिस्टर करोगे, कंप्लीट 9 मंथ्स बिफोर द इंटर एग्जाम, बाकी के जो बैलेंस आर्टिकलशिप है वो आप एग्जाम रिजल्ट के बाद कर सकते हो। अपीयर फॉर द सीए इंटर एग्जाम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू प्रोविजनली रजिस्टर ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो 4 वीक का कंप्यूटर कोर्स है वो आपका पहले ही हो जाएगा, तो आपका 1 मंथ सेव हो जाएगा। Let us go through a step-by-step detailed procedure for students who have already cleared their graduation or post-graduation. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ICAI की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डिटेल प्रोसीजर मैंने आगे आपके साथ डिस्कस किया है। स्टेप 2, register and successfully complete 4 weeks of ICITSS ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स है, 4 वीक्स का है, तो पूरा आपका 1 मंथ उसी में निकल जाएगा। ये आपको आर्टिकलशिप के पहले कंप्लीट करना ही है, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप 3, रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप। वैसे आर्टिकलशिप की टोटल ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स की, लेकिन क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जा रहे हो आपको 9 मंथ्स सीए इंटर एग्जाम के पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो बैलेंस है आर्टिकलशिप का वो आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो 9 मंथ्स आप अभी कर रहे हो इट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल आर्टिकलशिप ऑफ 3 years. Step 4, you have to study along with your articleship. हाँ, थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्टर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्टडी अलॉन्ग विद देयर आर्टिकलशिप। मतलब काम करते करते पढ़ाई भी करनी है और उन्हीं 9 मंथ्स में फिर आपको एग्जाम की तैयारी करके बाद में एग्जाम भी लिखना है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। Step 5, appear and clear both groups of CA Inter. तो आई एम अज्यूमिंग कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे एंड यू विल क्लियर बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA Inter. वो करने के बाद देन यू कैन रजिस्टर फॉर CA फाइनल। Undergo 4 weeks of AICITSS during the last 2 years of your practical training, but before appearing for your CA final exam. तो पहले आपने जो किया था वो सिर्फ एक बेसिक कोर्स था, यहाँ पर अभी एडवांस्ड कोर्स हो जाएगा, इट्स लाइक अ कंप्यूटर कोर्स, वो भी 4 वीक्स का ही है। तो CA फाइनल में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आपको वो 4 वीक्स का कोर्स करना है, आपकी आर्टिकलशिप भी कंटिन्यू होगी। लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर आर्टिकलशिप में आप फिर CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। सो अपीयर फॉर योर CA फाइनल एग्जाम इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर आर्टिकलशिप, क्वालिफाई बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA फाइनल, कंप्लीट योर आर्टिकलशिप। कभी कभार हम थोड़ा सा एक्सेस लीव ले लेते हैं फॉर एग्जाम, जो भी आपका एक्सटेंडेड पीरियड है आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर दो, आपका CA फाइनल क्लियर हो चुका है एंड नाउ यू कैन रजिस्टर एज द मेंबर ऑफ ICAI.
अगर आपका CS इंटरमीडिएट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी का इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हो चुका है एंड यू वांट टू नाउ अपीयर फॉर द CA इंटर एग्जाम, तो आप कर सकते हो इन 10 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 बोलता है रजिस्टर फॉर CA इंटर विद ICAI एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सेम एज द प्रोसीजर फॉर नॉर्मल रूट स्टूडेंट्स। प्रोसीजर मैंने बाद में डिस्कस किया है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, अंडरगो 8 months ऑफ स्टडी पीरियड टू अपीयर फॉर द CA इंटरमीडिएट एग्जाम। तो 8 months की स्टडी पीरियड होगी, उसके बाद ही आप अपना एग्जाम लिख पाओगे। तो इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके और एग्जाम के बीच में 8 months का गैप होना चाहिए। अपीयर एंड पास आइदर सिंगल और बोथ ग्रुप्स ऑफ CA इंटर एग्जाम। अगर सपोज आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रुप 2 हो जाता है, ग्रुप 1 नहीं हुआ कोई भी रीजन से, तो भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ग्रुप हो गए तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो आर्टिकलशिप। रजिस्टर फॉर 3 year आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ऑन पासिंग आइदर और बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटर। स्टेप 5, आपका CA इंटर एग्जाम हो गया है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक ग्रुप हुआ था वो भी क्लियर कर दिया। उसके बाद यू विल एनरोल फॉर CA फाइनल आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट। आपकी आर्टिकलशिप अभी चल ही रही है। स्टेप 6, अंडरगो एंड कंप्लीट 4 weeks ऑफ AICITSS जो कंप्यूटर कोर्स है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपीयरिंग फॉर योर CA फाइनल एग्जाम। Appear for CA final exam during the last 6 months of your articleship training. Qualify both the groups of CA final, आपका हो जाएगा CA final, articleship भी complete कर दो and then you can become a member of ICAI. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रोसीजर देखना है तो मैं लिंक छोड़ देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ब्लॉग में मैंने पूरा प्रोसीजर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CA डायरेक्ट एंट्री रूट। मान लो कि आपको आपका एग्जाम मई मंथ में देना है, जो मई अटेम्प्ट है, देन योर रजिस्ट्रेशन शुड बी डन आइदर ऑन और बिफोर 31st ऑफ जुलाई। तो अगर आपको मई 23 में अब अगर एग्जाम देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन 31st जुलाई 2022 से पहले हो जाना चाहिए। अगर आप नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो then you have to register before 31st of January of that year. तो मान लो कि अगर आपको 2023 में अब एग्जाम देना है, क्योंकि 2022 के जो रजिस्ट्रेशंस थे वो तो हो गए, 2023 में अगर आपको एग्जाम लिखना है then you should register yourself before 31st Jan 2023. अब देख लेते हैं अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रजिस्टर योरसेल्फ विद ICAI। देखो स्टूडेंट्स, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करो या फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लो, प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले ICAI के पास रजिस्टर करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप IT ट्रेनिंग बोल लो, आर्टिकलशिप बोलो, वो स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जाओगे ICAI.org पर। वैसे आप डायरेक्टली SSP पोर्टल पे भी जा सकते हो, लेकिन ये सिंपल है, ये जो एड्रेस है वो इजीली याद हो जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ICAI.org पर। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, वहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखो देयर इज़ अ सेल्फ सर्विस पोर्टल। देखो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है। एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, देयर दे विल आस्क यू टू साइन इन। लेकिन आप तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो, आपने तो कभी यहाँ पर साइन इन नहीं किया होगा, आपका कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। तो नीचे देखो, फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर, you will click on this and it will take you to another page for registration. If you see, they are asking you to fill all your personal details. So this is a basic page जहाँ पर आपको अपने personal details fill करके
रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप करना है. So these details are required only when you want to create your account. This is not the registration process. This is just a procedure for account creation. So you will fill in all your details. सबसे पहले salutation, Mr, Mrs, Miss, you will select one of these options. Gender select करोगे, male, female. Country code, सबसे पहला option है India +91, so you will select India 91. Country name, the first option is India, so you will select that. Write the first name, middle name. Now the fields marked in asterisks, they are important. The name should be as per your 10th or 12th certificate. Many a time students make an error in writing their name and then they call me and say, ma'am, error आ रहा है या फिर मेरा registration reject हो गया. Please note students, you have to write your name as written on your 10th or 12th certificate. Middle name, last name is optional. Select date of birth, enter the date of birth as given in your 10th or 12th mark sheet. In spite of repeating this, in spite of stressing on these points, students still make an error. So I'll go very slow so that you can watch this video while filling the exam or while filling these details. But please note students, your name, your date of birth, gender should be, and salutation should be as mentioned on your 10th or 12th certificate. Enter your mobile number, email address, confirm your mobile number and email address. Confirm the country code, you will select the country code, whether it is 91 as given earlier. Nationality Indian, it's pre-filled, and then you will click on generate OTP. Suppose you don't have an email address because you have never used, okay, you have never created one for yourself. Please create the email ID and remember the password because that will be used for further communication. What if you have entered your mobile number but you make some error, okay, in registration, or you lose internet connection? Then when you go to register yourself again, it will show an error because your mobile number has already been registered with ICAI. In that case, try clearing the cache files, temporary files, search history, and then retry. If you don't clear the cache files and you keep trying, it will show the same error again and again. You can also enter your parents' mobile number if your mobile number is showing already registered. If that error is popping up, then you can enter the mobile number of either of your parents. Please read these instructions carefully. Enter your salutation, name, date of birth, gender as your 10th or 12th certificate. No change will be allowed after the form is submitted. Please enter your own mobile number and email address as the OTP will be sent on that number. You will get a separate email from CDS for study material. This is something which students ignore and they keep asking us, we have registered, we have not received the email from CDS. It will take 2-3 days minimum. I think you should wait for at least a week after receiving your registration number. You will get a separate email from CDS. Only after receiving that email you can order your books. International number will get the OTP only on email ID, not on mobile. So please read these instructions carefully. Recheck before you click on generate OTP. Now what I'll do is I'll enter the details over here. I'll wait for email and SMS, and after that I will show you the next step. After I clicked on generate OTP, I was directed to this page. Here you can see there are a few letters and numbers on display. Please enter the letters displayed in the image below. If the image is not clear, click on get new image. So you need to enter the letters and numbers that you can see on the screen. So let me do that. After that, I will click on the submit button. OTP is sent to your registered mobile number and email ID. Please validate OTP. I'll click on OK. So I am checking my email right now. I have received a OTP from ICAI. I will enter
this OTP and confirm my mobile number and email ID. After you click on OK, it will take you back to the page where you filled in your details. The OTP that you received on your mobile or email is to be entered in this field. See, when you see below, there is a field to enter OTP. I will enter the OTP received. So let me just go back to my OTP. Validate OTP. OTP has been validated successfully. Do you want to submit your form now? Click on Yes, submit now. Read these instructions. Are you sure you want to submit the registration form? Please enter your salutation, name, date of birth as per the 10th or 12th certificate. No change will be allowed. Enter your own mobile number and email ID as you will get notifications. So the same instructions are now displayed. When you click OK, your registration, the account has now been created. If you see on the left hand side, you will be able to see APP and a number is mentioned over here. That is your temporary registration number. You will now complete your registration process using this number. After a few days, after ICAI verifies your document, they will send you your final registration number. You will receive 2 emails on your email ID. One which contains your the temporary registration number and password. The second email contains a link to confirm your email ID. So just click on this link and they will show you a message that your email ID has been verified. You will go to the e-services login again. You can go to icai.org in the self-service portal. Log in using your temporary login ID and password which you have received on the email. After that, you will click on the login button. After you click on the login, your profile dashboard will be shown to you. Click on apply for CA course. On the left hand side, click on course registration. Apply for direct entry for new applicant registration. Click on the second option. We need to wait and the form will be pre-filled. There are many details which are already filled because you have used your temporary registration for login. So they have already filled your personal details. Are you differently able? No. Death of any parent during COVID. If you select yes, then you will get exemption. There is some fees exemption. In the correspondence address, you will enter the address where you want ICAI to send you letters. So if you are, let's say, living as a PG or you're living in a hostel, you're living in a metro away from your hometown, if you feel that I'm going to stay here for 2 or 3 years, then write that address in the correspondence address. If you feel that I'm going to change it every year or every 6 months, or I'm not going to stay here for more than 3 months, enter your home address, your permanent address, so that all the correspondence is sent to that place. Enter your correspondence address. Be very careful when you write the address because all the letters will be sent on that address. Enter the permanent address. You have to select whether permanent address is same as correspondence address. If you select on yes, the details will be pre-filled. Select a category, whether you belong to ST, OBC or other category. Nationality is Indian. Annual income is optional. Click on save and next. The next step is to fill in your qualification details. But before you do that, keep your attested mark sheets ready.
Take a photocopy of your 10th, 12th mark sheet. Take a photocopy, Xerox. Sign on it. You have to sign on it. That is the meaning of self-attestation. You will sign on it, scan it, and keep it ready for uploading. If you are filling this form in a cyber cafe, then take those scanned copies in a pen drive with you so that you can upload it when required. Here you will fill your class 10th details, roll number, board, month and year of exam, whether result is awaited or passed. So obviously we will select passed, marks obtained, maximum mark, percentage, and in case of CGPA you will enter that. Click here to upload. Similarly, you will enter your 12th standard details. After you enter the details, click here to upload will automatically be reflected. That button will be reflected. Registration mode. Are you a graduate or a postgraduate? Have you completed your intermediate exam of IC, that is ICW, that is Institute of Cost Accountants, Institute of Company Secretary, equivalent foreign education or others? You will select either graduation or post-graduation. So I'm selecting graduation. Please select, in case of undergraduate qualification, you will select the course whether you are doing Bachelor of Arts, Bachelor of Business Administration, BBA, or BMM, whether you are a BCom. So you will select the course, roll number, board, month and year of examination, passed, and you will click to upload your mark sheet. Now, I had mentioned earlier that students who are in their final year of final year of graduation, that is the third year of graduation, even they are eligible to provisionally register. Now, students, please note that if you are registering in your final year of graduation, you will instead of passed, here you will select awaited. As soon as you change it to awaited, your provisional registration will change from N to Y. That is from no to yes. Yes, you are provisionally registered. There is a note, please read that. If your result is awaited, you will be registered provisionally. You are required to upload the details, that is result status mark sheet, after the result within 6 months from the date of examination. So as soon as you get your mark sheet, within 6 months of examination, that is the time limit, okay, 6 months of examination, you will have to upload your mark sheet. Otherwise, your registration will be cancelled. You will not get a refund of money. So please upload your document within 6 months of examination. If you have already passed your graduation, then you will select passed and your provisional registration status will show as N, no. So here, if you select awaited, it is provisionally registered. If you select as passed, this is final registration. Now, for the students who are getting provisionally registered, they will have to later on log into SSP portal and upload their mark sheet. How will they log in? You will not use APP, that is your temporary registration number. Very soon after this registration is complete, you will get your final registration number. Use that to log into SSP portal and upload your mark sheet. So here, if you are a intermediate student of, or you have cleared your intermediate of cost accountants, enter the details. If you have cleared the intermediate exam of company secretary, enter the details. Any other equivalent foreign education. Details of post-graduation qualification if you are a postgraduate. Details of any other qualification. And that's it. You have to select the medium of study material that you want, English or Hindi. Whether you're joining for both the groups, it is by default selected with article, yes. And then you click on save and next. Over here, please read that students registering provisionally on pursuing final year of graduation will have to attach a bona fide certificate. They have written bonsai certificate. I think it should be bona fide certificate obtained from university or college. So you also have to attach a proof, that is bona fide certificate obtained from university or college. After you select on save and next, you click on that. The last step is to make
payment. So you can pay by various means like debit card, UPI, net banking. Payment details, I have given you a link in the description box. It has the payment details and these steps also. Payment is 18,000 plus you will also be required to pay 200 rupees for the prospectus. So 18,200 is the total fees. After you click on payment details, your registration process will be complete. You have to wait. Students, please note, you have to wait after that. Your final registration number will take at least 7 days to reach. You will get an email from ICAI sharing the final registration number with you. It begins with WRO, NRO, CRO, depending on the area that you live in, from where you have registered. So that will be your final registration number. You will use that to log in to SSP portal. To register for the IT course, go to www.icai.onlineregistration.org. I have mentioned the address here, icai.onlineregistration.org. Over there, you will be able to see the live batches which are on for the course. So on the left hand side, see, to see launch batches, you will be able to see the batches which are currently going on, the registration for which is currently going on. So you select Central, Eastern, Foreign, Northern, Southern, Western. So let's say I selected the Central region. This is the area. You can also select the area which is near to your place if you wish to go for the physical batch. Let's say I've selected Agra. Whether you want to register for the orientation course, that is the last option, or ICITSS, that is information technology. So if I select the orientation course, let's see that, get list. So currently in that area, there is a virtual batch. See, there is a virtual batch. Seats available for from 7th of February to 24th of February. These are the registration. These are the dates of orientation. Batch timing, name of the area, course, and open for general. Yes. If I select the IT and then get list, in the same area we have the IT course from 25th of Feb to 15th of March. It's a virtual batch. There are 41 seats available. These are the batch timings, place, IT course. So you have to register for both. You have to do the orientation course as well as the information technology, that is the ICITSS. So there are two options. You have to attend both the batches. All right. Now, for students who wish to register, like I want to register because I have not registered, I have not yet registered on the portal. So for students who wish to register, you will click on the login button. So it is at the top right corner. Click on the login button. Since you are registering for the first time, if you wish to register, you have not yet registered, so you're registering for the first time, so you will click on register as student. If you are going through the foundation route, you will select that option, and if you're a direct entry student, you will select that option. Now, since you will be a direct entry student, enter your registration number after you get it, like WRO, starting with CRO, NRO. Don't enter the APP, that's just a temporary registration number. Enter your final registration, which you get after few days after your registration process. So wait for that, wait for your registration number to arrive, and then you can register for the IT course. So let us enter the details over here. After you enter your registration number and your date of birth, you will see this screen. Fields marked with asterisk are mandatory. So enter salutation, first name, last name, father's name, mother's name, guardian's name, your date of birth, gender, registration number, whether you are from the CPT route or the direct entry student, address for correspondence, city, state, person with disability, parents if they have expired between this period,
Are you a ward employee, that is employee of the are you the child of an employee? PIN code, email address, mobile number, emergency number, and security information. After you click the submit button, you will get your registration number. Use to log in again. Okay, so use that registration number to log in again. Select the batch that you wish to attend. Depending, I already showed you the procedure, depending on the area, the course that you want, select that and you can attend the batch after paying the fees. Fees is 4,500 for the IT course. After you finish that registration, if it's a virtual batch, you will attend it online. And if it is a physical batch, you will have to go to that center. You will get all the acknowledgements, all the communication will be on the email ID that you have registered yourself with. So please enter the correct email ID for correspondence. So students, this is how you need to register for the IT course. So students, I hope आपको registration procedure अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने ट्राई किया है कि स्टेप वाइज आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं. अगर आपको ये जो स्टेप्स हैं उसका आर्टिकल, उसका जो मैंने ब्लॉग लिखा है वो चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर उसे पढ़ सकते हो. क्योंकि कल को अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, फटाफट आपने वो आर्टिकल ओपन कर लिया एंड यू विल बी एबल टू नो कि अब जो आप स्टेप कर रहे हो उसके बाद वाला स्टेप क्या है. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, share and subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही informative videos का notification आता रहे. Also visit my website theorymasterslearning.com क्योंकि CA इंटर के लिए हमारे पास lectures, books और test series है. If you would like to connect with me, number is in the description box. I would be very happy to help you.